Good morning, students. Chapter number 4, the components of the population structure. First, age structure, second, sex ratio, third, population composition, and now literacy and occupational structure. First of all, we will study about the literacy. The components, population structure, components number 4, literacy. Literacy also affect the population structure. And the population can be divided on the base of literacy. The population can be divided on the basis of the literacy, and the population structure can be studied on the base of the literacy. Clear? So first here, what is literal person? The human child about the 7 years, who can read and who can write and explain his views and understand others views are known as the literal person. Literal person किसे कहेंगे? About 7 years ago, about 7 years से बड़ा है ना बच्चा, ठीक है. दैट इज चिल्ड्रन एंड द मैन आल्सो कैन कॉल हियर द मैन एंड वुमेन आल्सो. ऐसा नहीं केवल मेल ही है ना, मेल एंड फीमेल आल्सो हियर द मैन एंड वुमेन अबाउट 7 years who can read and write. Then here, explain his views to others and understand the others views are known as literal person. क्या बोलेंगे? literal person, the person who read and write about 7 years, explain his views and can understand others views, known as the literal person. And the other here, the definition about the literacy: which persons above the age of 7 years who can make understand each other in their daily life through reading and writing, also called the literal person. Clear? Literacy rate. What is the literacy rate? The percentage of literal person in total population. The percentage of literal person in total population is called literacy rate. And literacy also include in the measurement of the SDI by UNDP. जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI को मेजर जो करती है ना, तो लिटरेसी इज यूज्ड इन डिटरमाइन SDI. SDI में 3 फीचर्स होते हैं: लिटरेसी, मेडिकल फैसिलिटीज एंड द पर कैपिटा इनकम. क्लियर? इन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, वी will study about the SDI, Human Development Index, and the determine SDI. Here also use the literacy. Clear? Literacy influences the reproduction, death rate, birth rate. Literacy से क्या होता है ना, reproduction also, birth rate, death rate, occupation, economic and social activities. All these are affected by the literacy. तो literacy influence the reproduction. literacy क्या करती है? reproduction को प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है. एंड डेथ रेट एंड द बर्थ रेट एंड occupational activities and the economic and the social activities. Occupation, economic and the social activities. And next here, the education is considered to be the main source of availing suitable opportunity in a society. देखो, जितना लिटरल पर्सन होगा उसकी जो अवेलेबिलिटी है अपॉर्चुनिटी की, वो क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना. द मेन सोर्स ऑफ द अवेलिंग सुटेबल अपॉर्चुनिटीज. हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी चाहिए तो उसके लिए क्या जरूरी है ना? हियर द नेसेसरी इज लिटरेसी. एंड द मेजर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लिटरेसी रेट. वी स्टडी अबाउट द मेजर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लिटरेसी रेट, जो लिटरेसी रेट को अफेक्ट करते हैं. द गवर्नमेंट policies, here the better government policies. Then here the education system is increasing day by day, and the strong education system, like here the
level of the economic development. The developed country here the education system is the so strong here. Urbanization, standard of the living, social status of women, government policies, all these are the factors affect the literacy rate. देखो ये तो factors हैं जो literacy rate को increase करने में वर्क कर रहे हैं, काम आ रहे हैं, ठीक है। लिटरेसी रेट को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है, ठीक है। तो व्हाट इज हियर द फैक्टर्स, तो दीज आर द फैक्टर्स, लेवल ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज, क्लियर। एंड दीज आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द लिटरेसी, ये फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, जो क्या करेंगे, लिटरेसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। लाइक हेयर द रिप्रोडक्शन, यानी कि लिटरेसी कम है ना, तो लिटरेसी कम है तो इस लिटरेसी कम हो ज्यादा हो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, reproduction, death rate, birth rate, literacy rate here the high, literacy rate high, then here the death rate decreasing, and literacy rate is high, then death rate decreasing, and the literacy rate is low, then death rate is increasing, ठीक है। तो all these here the occupational, economic and the social activities, all these are influence the literacy, clear। And next are occupational structure. Occupational structure, divide the population on the basis of the occupation can be called the occupational structure. The occupation like here the primary, secondary, tertiary activities, clear। And what is here the active population, the population engaged in the various occupational activities for earning and the livelihood, ठीक है, अपने जीवन के लिए और अर्निंग करने के लिए, all these activities done by the human, these population are कैलकुलेटेड इन द एक्टिव पॉपुलेशन, ठीक है। एक्टिव पॉपुलेशन में हम क्या काउंट करेंगे, पॉपुलेशन आर एंगेज इन द वेरियस ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज फॉर अर्निंग एंड द लिवलीहुड, यानी अपने जीवन जीने के लिए जो कोई भी एक्टिविटीज में है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या रहेंगे, एंगेज, दीज आर कॉल्ड द पॉपुलेशन आर कॉल्ड द एक्टिव पॉपुलेशन, दिस पॉपुलेशन आर कॉल्ड द एक्टिव पॉपुलेशन। ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज, व्हाट इज हियर द ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज, primary, secondary, tertiary, all these activities like at the first primary, in primary activities, agriculture, animal husbandry, wood cutting, that is called the lumbering, mining, and in secondary activities, manufacturing. First of all here the in secondary activities, manufacturing, and the commercial activities, ट्रांसपोर्टेशन इन द टर्सरी एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ सर्विसेज, ऑल दीज आर द टर्सरी एक्टिविटीज, ऑल दीज आर द टर्सरी एक्टिविटीज, क्लियर। एंड दीज आर इंक्लूड इन द ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज, ऑल दीज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज आर इंक्लूड इन द टर्सरी एक्टिविटीज, यानी हम जो भी काम करते हैं ना, ऑल दीज एक्टिविटीज आर इंक्लूड इन द ऑक्यूपेशनल activities. Next are the working population. Working population as here the 15 to 59, 15 year to 59 age group are included in the working population, and the 0 to 14 are also dependent population, and the above the 60 also the dependent population on the working population, clear। The men and women between 15 to 59 years as group are engaged in the various occupational activities like agricultural, foresting, mining are the working population, जो भी क्या कर रहे हैं ना, वर्क कर रहे हैं, ठीक है, engaged in the various occupational activities, और जिनकी एज क्या है 15 to 59, that is called the working population, ठीक है। Then here the in underdeveloped countries maximum population are engaged in the primary activities, and the developing and developed countries here the maximum population are engaged in the secondary and the tertiary activities, clear। And the day by day here the total population of the countries are changing their occupation. First, and after the independence of the India, the maximum population of the India is engaged in the agricultural activity, and now the time here the Indian population are increasing towards the secondary and the tertiary activities. So here divide the population with their occupational activities, occupational structure, occupational activities, that called the occupational structures. Now here all these five components are related to population structure.